Assalamualaikum class 10th. Hope you all will be good. In my last lecture I was discussing about the poem Try Again. We have done first three stanzas of the poem. We have done all difficult words meaning. We have done the theme of the poem, and I have also discussed the questions given in the poem. So I have given you home task. You have to write the meaning of these words. It was your home task, and question number 6 was your home task. Now I am going to start my 14th lecture. Today date is 6/7/2020 and day is Monday. Today I will discuss the comprehension given in your exercise book. Exercise C, 5 questions are given. I will discuss about these questions. Moreover, I will discuss the summary of the poem and how you have to do the paraphrasing. See, I have discussed all of these three stanzas, and I told you the meanings of difficult words. So there is a question in your board exams that one stanza will be given from any poem. It can be given from this poem also. Suppose first stanza is given, so 3 questions were made from one stanza. You have to give the answer by reading the stanza. I can also ask who is the poet of this stanza, or what moral lesson you can find from this stanza. I can also underline difficult words and can ask to write the difficult meaning of the underlined words given in this stanza. Any question can be made from one stanza, so you have to read it fully, learn the meanings. It is important you have to know the moral lesson or the all the figurative language given in the poem, all the moral lesson, all the important aspects of the stanza. Whatever I have told, you have to learn it by heart. That's why I am writing the summary of the poem. You have to learn the summary. It will help you to solve the questions given from each stanza. Let's see the summary of the poem. Try Again. This poem, Try Again, has been written by British poet William Edward Hickson. It is written W.E. Hickson. The full name of the poet is William Edward Hickson. So he was a British poet and he wrote this poem, Try Again. In this poem, he advises us that if ever we fail, we should not lose heart, but try again to achieve our target. So that is the moral lesson. He told us that we should not lose hope. If we fail, we should try again. We should keep struggling to achieve our target. Persistence and courage will lead us to victory. Failures of our lives teach us a good lesson of how to succeed. According to the poet, failure is not a disgrace. It is experience of our lives. Failure shows us a way of success in our lives through better experience. So जो नाकामी है वो हमें तजर्बात देती है, वो हमें एक्सपीरियंस देती है टू फाइंड आउट द वे ऑफ सक्सेस, कि हम जो है कामयाबी का रास्ता तलाश करें इन आवर लाइफ थ्रू बेटर एक्सपीरियंसेस, कि हमारे जो तल्ख एक्सपीरियंस है उनसे हम जो है सक्सेस का रास्ता तलाश करें. सो इट इज़ गुड फॉर अस दैट इफ़ वी फेल वी शुड नॉट लॉस होप. स्ट्राइविंग स्टेडफास्टली अर्न्स अस रिवॉर्ड. अगर हम कोशिश जारी रखेंगे साबित करने के साथ तो हमें इनाम हासिल हो जाएगा, रिवॉर्ड हासिल हो जाएगा. दिस यूनिवर्सल रूल शुड also be kept in our mind. The poet gives us a principle of final success, which is to cling with hope. So that is the principle of the सक्सेस, दैट वी शुड क्लिंग विद होप. क्लिंग मीन्स जुड़े रहना, कि हमें उम्मीद के साथ जुड़े रहना चाहिए. देन वी विल गेट सक्सेस. वी शुड नॉट लॉस होप. नेवर सिट आइडल एट आवर फेलियर. हमें नाकामी पर अफसरदा होकर या सुस्ती के साथ बैठ नहीं जाना चाहिए. बट शुड पेड फोर्थ करेजियसली. बट हमें हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए. द रूल्स ऑफ ट्राइंग अगेन नेवर टेल्स वन डाउन इन वंस लाइफ. द मैन हु इज़ नेवर स्लगिश. वो आदमी जो कभी सुस्त नहीं होता. स्लगिश का मतलब होता है सुस्त या काहिल होना. ऐसा शख्स तो काहिल नहीं है. बट वर्स डेलीजेंटली मीन्स मेहनत के साथ काम करता है. और वो लेकिन वो मेहनत के साथ काम करता है. एंड प्रीफ्लेक्चुअली अल्टीमेटली विंस द गोल. और वो आखिरकार अपनी जो
मकासद हैं उसमें कामयाब हो जाता है। सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन, डिक्शन मीन्स जो बयान करना है, यानी जो बयान करने की सादगी है ऑफ दिस पोएम इज़ मार्वलस। सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन ऑफ दिस पोएम इज़ मार्वलस। इस पोएम को बयान करने की जो सादगी है वो बहुत ही उम्दा है। वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड द लेसन ऑफ द पोएम ट्राई अगेन। सो वन कैन ईजिली नो द लेसन ऑफ द पोएम दैट वी शुड बी ट्राई अगेन टू अचीव आवर टारगेट। सी द क्वेश्चन आंसर। First question is, what is the lesson taught in the first stanza? The first stanza teaches us a lesson to try again so that we may succeed in our life. It also tells us if we work steadfastly and courageously, we shall conquer our difficulties. कि हम अपनी जो मुश्किलात हैं उनको फ़तह कर लेंगे अगर हम मेहनत को जारी रखेंगे साबित कदमी के साथ और हौसले के साथ। What can you learn from failure? We can learn from our failure about our drawbacks and weaknesses. कि हम नाकामी से अपनी जो बुराइयां हैं और जो कमज़ोरियां हैं उनके बारे में जानते हैं। If we overcome our weaknesses, we can get success in our life by trying again. And if we know our weaknesses, अगर हम अपनी कमज़ोरियों को जान लें, उसको ओवरकम कर लें, यानी उस पर काबू पा लें, तो हम कोशिश करने से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस, यानी कि जो फेलियर है वो कैसे आपकी इंसल्ट नहीं है। फेलियर इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस बिकॉज फेलियर इज़ नॉट अ क्राइम, इट इज़ नॉट अ क्राइम। फेलियर गिव्स अस एक्सपीरियंस विच लीड्स अस टू द सक्सेस एंड मेक्स अस रिस्पेक्टेबल in society. So if we fail, it give us experience. It is an experience to lead towards the success, and it give us respect in society. How many times should we try and why? We should go on trying till the final success because regular struggle leads us to victory. So we should be trying again and again till we get the victory. What should we do if we find our task hard? Even if we find our task hard, we should try again, which will help us to overcome our obstacles. अपनी जो hurdles हैं या मुश्किलात हैं उसको overcome करने में हमें ये मदद करेगा। If we try again of our ways, at last we shall be able to reach our डेस्टिनेशन, आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इफ़ वी ट्राई अगेन एंड अगेन एंड इफ़ वी ओवरकम आवर हर्डल्स आर ऑब्स्टेकल्स, वी कैन easily succeed in our task. That are the question answers given in your book exercise. I am giving you 5 question answers for learn and also the summary of the poem for learn. I hope you will follow it. Also do it as homework in your neat notebooks. That's your work. That's it. Allah Hafiz.